हेलो एवरीवन मो राकेश समस्त को स्वागत करुछि Adda247 रो ओडिया चैनल रे। तो आज आमे हमरो जो मैथमेटिक्स क्लास ऑलरेडी मु चारिटा क्लास नै सारी छि ताको आज कंटिन्यू करबा। आज 5th नंबर क्लास। तो जो माने भी मोर क्लास देखिनो आगरु चारिटा क्लास मु नेतिली से क्लास में एबे भी देखि पारिबो। ओके तो स्टार्ट करबो। मु ऑलरेडी 15 मिनिट्स लेट हे गलिनी जे टेक्निकल प्रॉब्लम थिला। तो ओके तो गुड मॉर्निंग मधुमिता, सॉरी गुड इवनिंग मधुमिता एंड प्रणाम प्रशांति। ओके क्लास हबो। ओके सॉरी मोटिके लेट हे गली। तो ठीक अछि। तो आज रो थर्ड ऑफ द डे समस्त स्क्रीन रे देखि पारुतबो। सो इफ यू वर्क मोर देन यू इमेजिन यू विल अचीव मोर देन यू इमेजिन। तो या विषय मु बेसिक जे कहिबिनी। सो तो समस्त को मु रिक्वेस्ट करबी कि हमरो जो Adda247 रो ऐप अछि समस्त ऐप को इंस्टॉल करो। तुम यदि ऐप इंस्टॉल करबो तो हमरो करंट अफेयर्स से तुम अपडेट रहि पारिबो सब टाइम रे। हमरो जो वीडियो गुरा तुम देखुचो एटा YouTube रे तुम एक्सेस करि पारुचो, सेंति तुम ऐप रे भी वीडियो गुरा को देखि पारिबो। जहां भी YouTube रे लाइव क्लासेस गुरा होउची ताको तुम ऐप थ्रू रे भी देखि पारिबो। किंतु तुम यदि वेबसाइट रो तुम देखिया पई चाहिबो वेबसाइट रो तुम वीडियो गुरा को एक्सेस करि पारिबोनी। तो बहुत किसी एडवांटेज अछि ऐप रो। हम समस्त को कहबी कि समस्त Adda247 रो ऐप को इंस्टॉल करो। सेटी स्टेट एग्जाम्स को जाई कि ओडिशा स्टेट एग्जाम्स को सिलेक्ट करिवो। तापर सेटी स्टोर को जाई कि जहां भी लाइव क्लासेस कोडा होउची सेते तुम एनरोल करि पारिबो। मो कोड समस्त स्क्रीन रे देखि पारुतबो। मो कोड होउची web532. so if you use this code then you will get flat 17% off. okay तो समस्ते हमर Adda247 ओडिया YouTube चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो नोटिफाई मी ऑप्शन रे भी क्लिक कर देतिबो। और हमर गुटे Adda247 ओडिया रो टेलीग्राम चैनल अछि। तो जो माने टेलीग्राम रे भी जॉइन करिया पई चाहूचो तो से माने टेलीग्राम रे जॉइन करि पारिबो। सो दैट हमर जो टाइम रे जो भी क्लासेस कोडा होउची ता विषय तुम अपडेट रहि पारिबो। प्लस किछि भी एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन आसुची तुम जानि पारिबो। ओके लेट न करी कि आज रो क्लास स्टार्ट करिबा। नो योर मेंटर समस्त जानिथिबो हमर जो टीचर गुडा अछंती Adda247 ओडिया फैमिली रे। ओके तो समस्त विषय कहबा कि दरकार नै। समस्त फोटो समस्त स्क्रीन रे देखि परतबो समस्त जानिथिबो। ओके सो विल स्टार्ट द क्लास लेट न करी कि आज होची 5th नंबर क्लास। हां ऐप रे फ्री क्लासेस गुडा भी होची। ओके तो ऐप रे तुम फ्री क्लासेस गुडा को एक्सेस करि पारिबो। तो जो क्लासेस गुडा YouTube रे होची सेही क्लासेस गुडा तुम ऐप रे भी देखि पारिबो। ओके यस प्लेलिस्ट सब अछि रोजा इमेजिनेशन। तो प्लेलिस्ट तुम सब जगह पाइबो। ओके तो लेट न करी कि आज रो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करबा। समस्त का सामने रे आज रो फर्स्ट क्वेश्चन if the sum of the nature of the roots of the equation जोटा अछि this is quadratic equation. okay kx square minus 8x plus 7 equal to 0 is 4/3. then find the product of roots. okay so find the product of roots. समस्त आंसर को नमस्कार स्वागतिका। okay so try to solve these questions. if the sum of the nature of the roots of the equations, this is quadratic equations, kx square minus 8x plus 7 equal to 0 is 4/3 then find the product of roots. रोजा तुम्हें प्लेलिस्ट को जाई कि प्रीवियस क्लासेस गुडा देखिबो। यू विल गेट माय क्लासेस। समस्त ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करिया पई। एई टाइप रो क्वेश्चन तुमरो आसीबो OSSC CGL रे, OMAS एग्जाम रे, BSSO एग्जाम रे। एई टाइप रो क्वेश्चंस निश्चय आसीबो। ओके तो भाबी चिंती कि समस्त आंसर को ठीक हो भूल हो समस्त ट्राई करो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? यस तो देखो ओके तो
कौन से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म रे अछि माने एटा होची गुडे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द जनरल फॉर्म तो यारो सब बेले सम होए मन रखिता sum is always equal to minus b by a and the product is always equal to c by a. So remember these things. तो sum होची minus b by a तो एठी जो अछि ax² minus 8x plus 7 equal to 0 तो यार sum केते हबो तो sum हबो minus of minus 8 divided by k and that value is given here 4 by 3 समस्ते बुझिया पई ट्राई करो हां 11 am रे बेबे मु बिजी रहउची तो मो सेति पई इवनिंग रे ही खाली फ्री रहउची तो इवनिंग रे ही मु क्लास नहीं पारिबी स्वागतिका तो देखो एटी माइनस ऑफ माइनस 8 इक्वल टू 8 by k इक्वल टू 4 by 3 तो मु एटी k रो वैल्यू पाई जिबी तो k रो वैल्यू केते 8 into 3 divided by 4 so the answer is 6 so what is the value of k here 6 so what is the product एटी पचारुची find the product of the roots तो product केते c by a तो c एटी केते अछि तो c एटी अछि 7 तो 7 by a रो वैल्यू केते तो ax² तो k रो वैल्यू मु पाई आइची 6 तो 7 by 6 is the correct answer the correct answer was 7 by 6 okay yes clear now we'll move to the next question समस्त का सामना रे अछि solve करो if the cost of each chocolate is reduced by ₹5 then 5 more chocolate can be purchased for ₹50 find the cost of each chocolate yes ट्राई करो समझते suppose cost of each chocolate is suppose x suppose cost of each chocolate is suppose x okay so if the cost of each chocolate is reduced by 5 okay तो जदी chocolate रो price रे 5 टंका कमी गला okay then 5 more chocolate can be purchased for ₹50 okay so suppose yes correct answer is 10 yes the correct answer is 10 हबो तो देखो फर्स्ट बुझिया पे ट्राई करो तो suppose cost of each chocolate x आ ता पाखरे फर्स्ट मने करो से उवाटा चॉकलेट किनुतला केते टंका देखि 50 टंका ओके तो 50 टंका रे कोटे चॉकलेट रो दाम जदी x टंका ओके तो फर्स्ट से उवाटा चॉकलेट किनुतला 50 टंका ओके तो व्हाट इज xy तो xy इक्वल टू 50 ओके तो xy इक्वल टू 50 नाउ तो एबे जदी 5 टंका कमी गला तो x minus 5 तो आगुरु से y टा किनुतला एबे जदी 5 टंका कमी गला सेबे 5 टा बेसिक किनिबो ओके सो x minus 5 into y plus 5 equal to again that 50 okay so here you will get a quadratic equations okay तुम जदी equation 1 equation 2 को सॉल्व करिवो you will get a quadratic equation तो quadratic equation को तुम जेंति सॉल्व करो if you will solve that you will get one negative answer and you will get one positive answer okay so negative तो के आंसर हेई परिबोनी तो करेक्ट एठी पॉजिटिव आंसर हबो ओके तो मु तुमको सजेस्ट करबी कि तुमे एई मेथड रे सॉल्व परिबोनी काहे कि ना it will take more 1 or 2 minutes time okay so better what you have to do you know you understand the questions so now go from the answer substance if you will go from the answer substance you will get the answer 10 okay तो हमें जदी हमें 10 को लेके हमें चेक करिबा ओके देखो 10 तो जदी सब चॉकलेट रो प्राइस 10 टंका हमें आंसर ऑप्शन रो चेक करिबा ओके
So better is go from the answers option, or if you will solve, you will get a quadratic equations. So quadratic equation को तुम यदि solve करिबो गोटे negative रे answer बाहरिबो गोटे positive रे answer बाहरिबो. Okay, so we have to take the positive answer, but आमे सेमति करिबानी. आमे कोन करिबा, आमे answer option रो solve करिबा. So the best way to solve this question is go from your answers options. Okay, तो 12 जदि नेबा 12 रे 50 divisible no तो नै कि लाभ नै. 10 तो जदि मु 10 को नेबी 10 into 5. Now check 50, so 5 into, okay, so first kete thila again 10, okay, so the answer is 10, 50, okay, clear samaste. So the best way to solve this question is go from the answer option. Okay, so late न करी के हमें next questions को दिबा. तो next question solve करिबा पूर्वरु समस्त को मु कहि रखे. एबे हमरो पिला माने एबे हमरो सब जगह प्रोडक्ट रे 17% ऑफ चली छी. तो फॉर दिस यू हैव टू यूज माय कोड. मो कोड केते y53. सो इफ यू यूज दिस कोड, ओके, देन यू विल गेट फ्लैट 17% ऑफ. तो जो माने भी तुमे किछि प्रोडक्ट किनिबा पई चाहू छ, तुमे माने किनि परिबो बाय यूजिंग माय कोड, सो दैट यू विल गेट फ्लैट 17% ऑफ. हम समस्त को सजेस्ट करिवि समस्ते Adda247 रो ऐप रो किनिबो, काहेकि ना ऐप रो किनिले तुमे आउ भी किछि डिस्काउंट पाइबो. किछि पॉइंट सेली थाय ऐप रे, तो मोर देन 17% you will get off. Okay, now we'll move to the next questions. The next questions तुम समस्त के सामने रे अछि. Try to solve this question. 3 bells ring at regular intervals of 3 minutes, 4 minutes and 8 minutes respectively. At what time will all the 3 bells ring together if all start ringing from 10 AM onwards? Solve करो समझते. आज इंटरनेट टिके स्लो होची जणा नै कोन पे. यस देखो, तो फर्स्ट जिंस ए क्वेश्चन सॉल्व करबा पूर्वरु समस्त को जणातिबा दरकार. ओके, नो नॉट 10:15 AM. तो देखो तीनटा बेल अछि जोटा कि रेगुलर इंटरवल दे, माने जो फर्स्ट बेलटा 3 मिनिट पर बाजुची, सेकंड बेलटा 4 मिनिट पर बाजुची और थर्ड बेलटा प्रति 8 मिनिट रे थरे बाजुची. ओके, तो देखो, तो फर्स्ट बेल 3 मिनिट रे बाजिला, प्रति 3 मिनिट रे बेल फर्स्ट बेल. सेकंड बेल केते मिनिट रे थरे बाजुची, 4 मिनिट रे थरे बाजुची. एंड जो थर्ड बेल अछि सेटा 8 मिनिट रे थरे बाजुची. ओके, नाउ एबे देखो, तो फर्स्ट बेलटा पुनी 3 मिनिट पर बाजिबो, माने 3 रो मल्टीपल 6 9, ओके, 12 15. ओके, तो प्रति माने 3 मिनिट रे माने 6 मिनिट रे, 9 मिनिट रे, 12 मिनिट रे, 15 मिनिट रे फर्स्ट बेलटा बाजी बाजी की चली. ओके, यस, बहुत बढ़िया कुछ तो गेमिंग. नाउ सेकंड बेलटा प्रति 4 मिनिट रे बाजिबो, 4 8 12 16. ओके, लाइक दैट. ओके, एंड थर्ड बेलटा 8 16 24. ओके, 32. तो देखो मोइटी कोन नउची, मोइटी नउची मल्टीपल. ओके, तो सब जाका नंबर रो मोइटी मल्टीपल नउची. ओके, तो एटी देछि कि at what time will all the 3 bells ring together, माने मते ने आपे पडिबो कॉमन. ओके, तो I have to take common. The common and first if all start ringing from 10 AM. तो 10टा पुरे फर्स्ट को टाइम रे सामने पुणी एका संगे रे 3 जाका बेल बाजिबे, माने लिस्ट कॉमन मल्टीपल नउची. कॉमन मते दरकार काहे कि ना सेम टाइम रे बाजिबा दरकार और लिस्ट. ओके, तो एलसीएम, तो डायरेक्टली तुम एटी कोन करि परबो, यू कैन टेक द एलसीएम ऑफ your 3 4 and 8. Okay, so what is the LCM of 3 4 and 8? 20. Okay, so after 24 minutes all these 3 bell will ring together. Okay, so here, so 10 24 AM रे 3 जाका बेल
पाजिबो ओके तो जदि तुम याको कंटिन्यू करी के चलिबो ओके तो 24 is the least common multiple of all these three numbers okay yes देखो सब जिनस मु शॉर्टकट जदि कहबी ओके तो तुम बुझी पारिबो तो फर्स्ट कांसेप्ट बुझिबा दरकार कांसेप्ट बुझिले जाई तुम आउ भी किछि डिफिकल्ट क्वेश्चंस आसिले तुम निजे निजर शॉर्टकट तयारी करि पारिबो शॉर्टकट जदि कहबो मु बहुत गुडा शॉर्टकट कहि पारिबी बट यू कांट रिमेंबर ऑल द शॉर्टकट्स तुम सब जक शॉर्टकट को जते एग्जाम रे तुम अपियर करबो शॉर्टकट को भूली जिवो सो फर्स्ट यू शुड नो द कांसेप्ट ए जिनस जदि मु कहबी नि ए काहे कि एलसीएम निया जाउची तो क्वेश्चन जदि टिके चेंज कर देला तुम आंसर दे पारिबो okay clear now we'll move to the next questions बहुत simple questions ए टाइप रो questions एटा को एग्जाम रे आस्तेला OSSC एग्जाम रे मोर प्रीवियस क्वेश्चंस रो ही देछि A B C and D are four consecutive even numbers respectively and their average is 65 okay so what is the product of A and B बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेटा डायरेक्टली तुम सॉल्व करि पारिबो यू कैन यूज द शॉर्टकट हियर A B C D चारिटा consecutive even numbers and their average is 65 so what is the product of A and D को समझते आंसर को yes swagatika no ट्राई करो समझते ठीक हो बोलो समझते ट्राई करो yes बहुत बढ़िया प्रशांति एंड संतोष यस देखो तो केमती याको सॉल्व कराबो तो फर्स्ट देखो ए बी सी डी चारिटा कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर ओके तो दिस ए बी सी एंड डी आर फोर कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर्स तो जो भी कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर हो ओके तो जदि चारिटा कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर्स ऑफ नंबर्स आर दिया मन रखिता इफ ऑड नंबर ऑफ even numbers are there then the middle number is the average of all the numbers then the middle number is the average of all the numbers so suppose panchada okay odd number of even numbers achi so suppose mu lekhuchi dekho 12 14 16 18 or 20 here all these are consecutive even numbers or total ketara achi di panchota achi then remember this 16 is the average of all this number okay so remember here the middle number is the average of all the numbers like that if even number of even numbers are there then average of the middle of the two numbers it's your average माने जदि एठी सपोज चारिटा अछि इवन नंबर ऑफ नंबर अछि सपोज स्टार्ट होछि 16 टू 16 18 20 and suppose 22 okay so here what is the average of the middle two numbers माने 18 और 20 रो एवरेज केते 19 so average of 16 18 20 and 22 is 19 एबे समस्ते बुझी पाइबो किछि करबा दरकार नै ओके किछि x + 2 4a + 12 किछि लिखिबा दरकार नै ओके तो देखो एठी मो तुमको स्मार्ट वे इज केम सॉल्व करिवो सेटा बुझोछि तो यू नो कि चारिटा नंबर अछि एंड द एवरेज इज 65 so if the average is 65 then what are the values of a b c और d तो a रो वैल्यू केते 65 - 1 64 तो b रो वैल्यू 64 a रो वैल्यू 62 C रो value 66 और D रो value 68 okay then if the values are 62 64 66 and 68
then the average is 65. Okay, so you know you got the average 65. Okay, and the values you now know 62, 64, 66, 68. The पचारची कौन what is the product of A and D? The product of A and D माने 62 into 68 तो केते हबो 8 दुणे 16. ओके देखो जो चारिटा आंसर ऑप्शन अछि ए चारिटा आंसर ऑप्शन भितरु खाली गोटे आंसर ऑप्शन रे यूनिट प्लेस रे 6 अछि बाकी बॉन्ड करके you can take on the 4 to 1 6. क्लियर समझते ना को पॉइंट कहार डाउट होची. सो दिस इज द ट्रिक एटा हला तुमरो स्पीड करिवारो मेथड. ओके किछि x + 2 x + 4 किछि लेखिबा दरकार नै. इफ यू नो दिस कांसेप्ट ए जिंस तुम जदी जानि छ ओके विद इन सेकंड यू विल गेट द आंसर. 6 सेकंड टू 7 सेकंड भीतर ए क्वेश्चन को तुम सॉल्व करि पारिबो. ओके क्लियर. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिबा पूर्वरु समस्त को मो जणे दिए आमर गोटे वाल्मीकि ना रे गोटे कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट प्रिपरेशन बेस स्टार्ट हेची सॉरी स्टार्ट हबो सेप्टेम्बर 23rd रो स्टार्ट हबो. तो जो माने भी एनरोल करिया पई चाहू छ यू कैन एनरोल बाय यूजिंग माय कोड. मो कोड समस्त देखि परतबो स्क्रीन रे वेब 532. तो तुम जदी मो कोड यूज करबो वेब 532 देन यू विल गेट फ्लैट 17% ऑफ. तो लेट न करिकी तुम जदी तुम फ्रेंड्स मानको भी सजेस्ट करि पारिबो जो माने OSSC पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्जाम अपियर करिवे. तो एटा पूरा एग्जाम सिलेबस वाइज पूरा क्लास हबो. एग्जाम रे दो टाइप रो क्वेश्चन आइतला सेही टाइप रो क्वेश्चन से सॉल्व करा. सेमती हमर गोटे रुद्राक्ष ना रे गोटे बेस स्टार्ट होची सेप्टेम्बर 16 रो जोटा कि कंप्लीट फाउंडेशन बेस फॉर SSC OSSC एंड OSSC. तो जो मानकर बेसिक क्लियर नै एटा पूरा सब्जेक्ट वाइज क्लासेस अब जेमति आमे एटी गोटे एवरेज रे गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करि दोछु गोटे टाइम एंड वर्क रो प्रॉब्लम सॉल्व करूछु गोटे रेशियो प्रोपोर्शन रो क्वेश्चन सॉल्व करूछु. सेटी पूरा रेशियो प्रोपोर्शन रो दुईटा किबा तीनटा क्लास हबो. एवरेज रो दुईटा किबा तीनटा क्लास हबो. आ पूरा मॉडल वाइज हबो. तो जो माने भी एथरे एनरोल करिया पे चाहूछो दे कैन एनरोल बाय यूजिंग माय कोड WAV532 so that you will get flat 17% off. Okay, we will move to the next questions. Okay, solve करो. बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेटा. The revenue of a shop in the month of March was 40,000. In the month of April, the shopkeeper announced a discount of 20% and hence his sales went up by 20%. What will be the revenue of the shop in the month of April? सॉल्व करो समझते. पिला माने टिके क्लास को शेयर करो जेंति मैक्सिमम रो मैक्सिमम पिला क्लास करिवे. जहां भी मो प्रॉब्लम सॉल्व करो जे एटा आगो को तमरो जो गुडा भी एग्जाम आबो सब जाको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो इंपोर्टेंट. तो रेवेन्यू माने कोन फास्ट तक हम बुझे दे समस्त को. रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू योर प्राइस इनटू क्वांटिटी. ओके तो प्राइस इनटू क्वांटिटी माने सपोज 1 kg सुगर रो प्राइस सपोज 40 टंका और सपोज मो 5 kg सुगर को बिक्री करिवि. ओके तो जदि मो 5 kg सुगर को बिक्री करिवि तो मो केते टंका रा बिक्री करिवि मो 200 टंका रा बिक्री करिवि. सॉरी यस 200 टंका रा बिक्री करिवि. ओके तो पर केजी 40 टंका मो 5 kg बिक्री करिवि तो 40 into 5 तो 200 rupees. so that is the revenue. तो शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू that is the revenue. ओके यस बहुत बढ़िया कुस्तो गेमिंग. तो देखो तो एटी कोन होची रेवेन्यूज मार्च रे रेवेन्यू थिला 40,000 टंका. तो अप्रैल रे शॉपकीपर डिस्काउंट दोची केते पर प्राइस रे केते डिस्काउंट दोची प्राइस रे से डिस्काउंट दोची 20%. तो 20% डिस्काउंट दोची तो तारो सेल्स आगुरु जहा होतला सेतिरे 20% एबे इंक्रीज हे गला. ओके तो एबे से पचाचे व्हाट विल बी द रेवेन्यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके तो अप्रैल ले तार रेवेन्यू केते. ओके तो देयर बेस्ट टेक्निक होची देखो तो 20%
तो 20% को जदि मो फ्रैक्शन रे कन्वर्ट करबी केते 1/5 तो प्राइस ता माने तो जदि आगुरु 5 थिला एबे सेटा 5 - 1 4 हे गला ओके तो जदि 5 थिला प्राइस एबे सेटा कमी की 4 हे गला तो 20% कमी जाईची तो क्वांटिटी रे केते इंक्रीज हेची 20% इंक्रीज हे जाईची तो क्वांटिटी रे 20% इंक्रीज माने फर्स्ट 5 थिला एबे सेटा 5 + 1 6 हे गला ओके तो फर्स्ट रेवेन्यू केते थिला 5 * 5 25 एडी रेवेन्यू केते हे गला 6 * 4 24 okay so but these are not the exact value so this 25 is equivalent to your actually kete यार value 40,000 तो मते केते दरकार मते 24 दरकार 25 is equivalent to 40,000 or you can write if 25x equal to 40,000 then 24x equal to kete so the answer will be 38,000 so correct answer 38,400 clear so this is the best way to solve this type of questions okay एको आगुडे ट्रिक रे भी तुम सॉल्व करि पारबो you can use the net or effective percentage change is always equal to a plus b plus ab by 100 okay तो a plus b plus ab by 100 तो प्राइस एटी कमी जाउची तो प्राइस जगह रे मु लिखि पारबी -20 प्लस क्वांटिटी इंक्रीज होची +20 प्लस -20 into +20 by 100 ओके तो एटी केते परसेंटेज तमरो कमी जीवो सेटा तमे पाई जीवो तो 40,000 minus 4% बाहरिबो बोदे तो 40,000 minus 4% of 40,000 you will get this same answer 38,400 so remember this that trick also your net or effective percentage change is always equal to a plus b plus ab by 100 so this is तमरो decrease पेज डिस्काउंट माने से जगह तो माइनस यूज करियो ओके next questions find the number of event factors of 48 the 48 रे टोटल कितना event factors अछि तो 48 रे total how many event factors are there in 48 yes mixture allegations question next class रे मु mixture allegation रा questions पे नहीं के आसीबी okay yes so find the number of event factors of 48 तो समझते मते तो यार ऑलरेडी मु गुडे कहि साइतली मे भी फर्स्ट या सेकंड क्लास रे किंदी याको ब्रेक करिवो आउ sum of your prime factors number of factors number of prime factors number of event factors and or factors देखो तो एटी होचे 48 को मैं ब्रेक करिबा तो फर्स्ट ब्रेक दिस 48 ओके तो 48 को जदि मैं ब्रेक करबी 12 3 36 12 4 48 ओके so this is your 4 into 3 and this is 4 so this is 2 square this is also 2 square and this is 3 so 2 to the power 4 into 3 to the power 1 okay clear 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 16 3 और 40 तो 2 to the power 4 into 3 to the power 1 okay now yes तो देखो ट्रिक क्या रखो तो 48 को तुम्हें ब्रेक कर देलो प्राइम नंबर ओके प्राइम नंबर रो तुम्हें यस हां 8 हो ओके हां तो तुम्हें केमती याको ब्रेक करिवो तो याको तुम्हें मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स तो 2 to the power 4 into 3 to the power 1 so what how many prime factors are there so it is 2 out so how many prime factors are there so it is power रे केती होची 4 और 1 so the 4 plus 1 is 5 okay number of factors so number of factors power केती होची 4 तो याकू 1 रे ऐड करो into 1 plus 1
तो 5 into 2 केतरा होची 10 टा ओके नाउ फर्स्ट एटी बाहर करिबा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स केते तो एटी ऑड नंबर कोटा 2 और 3 भितरु ऑड नंबर होची 3 तो 3 टू दी पावर केते होची 1 होची तो बस या को 1 सहित ऐड कर दियो तो केते हला आसिला 2 so total number of factors 10 and number of odd factors 2 so number of even factors या माने number of even factors it's your number of factors that is 10 minus number of odd factors so correct एटी आंसर हो 8 तक गोटे क्वेश्चंस रो मु केते जिंस तुम मानन को कहि देछि तो जदी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पचारिबो पावर रे जहा थिबो ताको बस ऐड कर दबो ओके नंबर ऑफ फैक्टर्स जहा भी पावर रे थिबो ताको +1 करके इनटू कर ओके और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जहां भी ऑड नंबर थिबो तो ताको तुमे +1 करके मल्टीप्लाई करी क्लियर सो करेक्ट एटी आंसर हो 8 नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करबा पूर्वरु वो समस्त को कहि रखे कि हमर गोटे फोर्थ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई कैटेगरी 3 पई हमर गोटे बेस स्टार्ट होची सितंबर 29 रु सो आई विल टेक द मैथमेटिक्स क्लास हियर तो जो मैंने भी इतरे एनरोल करिया पे चाहू जो दे कैन एनरोल बाय यूजिंग माय कोड मो कोड समस्ते मन रख मो कोड होची वे 532 सो रिमेंबर माय कोड तो फ्रेंड्स मानन को भी तुम सजेस्ट करि परिबो मो कोड यूज करि के सामने किनि परिबे तो Adda247 रो ऐप को इंस्टॉल करो Adda247 ऐप को इंस्टॉल करि सारला परे तुम सिटी स्टेट एग्जाम्स को जाई कि ओडिशा स्टेट एग्जाम सिलेक्ट करिवो तापर स्टोर को जाई कि तुम स्टोर को जाई कि तुम तापरे चेक करिवो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रो एफसीआई कैटेगरी 3 रो सिटी तुम क्लिक करि कि एनरोल नाउ ऑप्शन कि बाय नाउ ऑप्शन मारिवो यूज माय कोड where 532 so that you will get start 17% off सेमती अभिमन्यु हमर गोटे बैच ऑलरेडी स्टार्ट हे सारी सितंबर 5 रो जो माने एबे भी एनरोल करिया पे चाहू छ एनरोल करि परिबो प्रीवियस जहा भी क्लासेस कोडा हेची तुम रिकॉर्डेड क्लासेस कोड एक्सेस करि परिबो ओके we'll move to the next questions aqua its sum of money is invested at compound interest amounts to 800 in 3 years and 882 in 5 years so what is the rate of interest the rate of interest kete वो आंसर को समझते ट्राई करो समझते सॉल्व करिया पे तो हमें समस्त को जाना थिबा दरकार कंपाउंड इंटरेस्ट रा फार्मूला केते a equal to p 1 plus r by 100 to the power okay now just put the value you'll get the answer देखो तो फर्स्ट एटी अछि योर 800 तो जदी मैं आपको पुट करबी तो 3 वर्ष रे तो 800 इक्वल टू प्रिंसिपल तो जाना नहीं 1 प्लस r हमको जाना नहीं बाय 100 केते वर्ष रे 3 वर्ष रे ओके सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ओके नाउ सेकंड 882 तो 882 इक्वल टू अगेन p प्लस p 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर this is equation number 2 okay तो देखो तो जदी मु इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 करिबी तो जदी इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 को मु करिबी तो एटी pp will be cancel तो 1 plus r by 100 to the power 5 divided by 1 plus r by 100 to the power 3 equal to 882 by
800 ओके तो 882 by 800 तो तुम्हारा ए टाइप रो क्वेश्चंस आसीबो तो तुम डायरेक्टली या पर स्टेप को तुम लिखि परिबो सो देखो a to the power n by a to the power n it's always equal to a to the power m minus n तो मु या को लिखि परिबी 1 plus r by 100 square equal to तो 882 so this is nothing but this is 441 by 400 तो ए स्टेप को तुम्हें डायरेक्टली लिखि परिबो ए टाइप रो क्वेश्चन डायरेक्टली आसे तो देखो एटी जहां भी डिफरेंस दिबो ईयर रे ओके तो जहां भी डिफरेंस दिबो 5 इयर्स 3 इयर्स तो एटी आकी बॉम्ब करके 1 plus r by 100 स्क्वायर तो एटी देखो 882 800 तो यार रेशियो केते 441 by 400 तो व्हाट इज 1 plus r by 100 तो 1 plus r by 100 तो स्क्वायर माने एटी स्क्वायर रूट हे दिबो so this is 21 by 20 so it will calculate the value of r here so you will get the answer 5% okay so everything is there बाकी सब जिंस अछि तो but we have to calculate r so 21 by 20 minus 1 okay then if you will solve this you will get the answer 5% तो ए स्टेप को तुम डायरेक्टली भी लिखि परिबो तो क्वेश्चंस रे आसे जदी एटी 2 इयर्स थांता आ जदी एटी 5 इयर्स थांता तो एटी कोन करतांतो तुम डायरेक्टली क्यूब रूट तो जहां भी देबो सेटा एग्जैक्ट परफेक्ट क्यूब देबो जदी सेमती क्वेश्चन थांता तो सेटी डिफरेंस केते 2 अछि तो तुम डायरेक्टली स्टेप लिखि जदी एटी डिफरेंस 3 इयर्स रो थांता तो मोटी क्यूब रूट करतांती जदी 4 इयर्स रो थांता मोटी फोर्थ रूट करतांती तो डायरेक्टली तुम ए स्टेप को लिखि पारिबो सो दिस इज द शॉर्टकट ओके we will move to the next questions who am the answer next questions to answer ko the present ages of Amar and his father are in the ratio 2:5 respectively 4 year hence the ratio of their ages will become 5:11 respectively what was father's age 5 years ago solve karo समस्ते सॉल्व करा बहुत सिंपल क्वेश्चंस मो ट्रिक कहबी केमती क्वेश्चंस को तुमे कम समय भीतर को सॉल्व करि पारि तो अमर रो एज को जदी मो ए लिखि देली तो अमर रो फादर रो एज को मो जदी एफ लिखि देली ओके तांको रेशियो केते अछि 2:5 माने a जदी 2x हबो f रो h हबो 5x ओके लाइक दैट 4 year hence तो यहाँ करो h जदी 2x यहाँ करो h 5x तो 4 year hence माने after 4 years ओके तो a plus 4 by a sorry f plus 4 equal to लिखि पारिबी 2x plus 4 by 5x plus 4 equal to 5:11 ओके तो या कुछ जदी तुमे सॉल्व करिवो x बाहर करि पारिवो x जदी तुमे कैलकुलेट कलो तो तुमे अमर रो और फादर एज कैलकुलेट करि पारिवो तापर व्हाट वाज फादर्स एज 5 इयर्स एगो 5 वर्ष पूर्वरु केते एस्तिला तो फादर एज 5x कैलकुलेट करि 5x - 5 तो एठी जहां भी x रो वैल्यू बाहरला देन तुमे कोन करिवो 5x - 5 करिवो यू विल गेट द आंसर ओके so you will get the answer now देखो तो याकु मु without doing all these things वो केमती याकु सॉल्व करि परिबे ओके so the best way to solve this type of questions is go from the answer substance okay तो देखो so एटी पचार जी what was father's age 5 years ago तो फर्स्ट आंसर ऑप्शन तो चेक करो जदी 5 वर्ष पूर्व फादर रो एज 40 वर्ष तो एबे का एज तारो केते फादर रो एबे का एज केते 45 तो 45 चेक करो 45 5 रो मल्टीपल ना नो यस 5 रो मल्टीपल 4 वर्ष परे फादर एज केते है 49 49 कहार मल्टीपल हेबा दरकार 49 11 रो मल्टीपल हेबा दरकार देखो एटी 11 4 वर्ष परे जहां भी हबो सेटा 11 रो मल्टीपल हेबो तो 49 इज मल्टीपल ऑफ 11 नो सो फर्स्ट आंसर ऑप्शन इज रॉन्ग ओके एबे चेक करो 45 एबे चेक करो 45 को 45 5 वर्ष पूर्वरु एबे का एज केते 50 50 मल्टीपल ऑफ 5 50 plus 4 54 54 is not the multiple of 11 so 11 ro multiple nuha so this is also wrong okay ebe check karo 30 तो 38 तो 35
35 plus 4, 39. It's not the multiple of 11. So this is also wrong. 35. So 35 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏବେର ଏଜ୍ କେତେ 40 40 ଟା multiple of 5 and 40 plus 4 44 is multiple of 11. So correct answer was 35. So this is the trick to solve this type of questions without doing all these things. Okay, if you are smart, then from answer of options you will get the answer. Clear समझते ना कहारो को पॉइंट डाउट होची मो नॉर्मल मेथड ए सॉल्व करूनी तुमे x जदी कैलकुलेट करिवो तापर तुमको 5x कैलकुलेट करे पे पड़िबो 5x - 5 कले you will get the answer. Okay, but you will go from the answers option जहां बे रेशियो अछि तार मल्टीपल हेबा दरकार. तो प्रेजेंट एज टा फादर रो 5 रो मल्टीपल हेबा दरकार 4 वर्ष परे फादर एज 11 रो मल्टीपल हेबा दरकार. Clear? The correct answer was 35. So this is the trick. तो ए टाइप रो ट्रिक तुमको अप्लाई करिया पे पड़िबो एग्जाम रे. तो नेक्स्ट स्टार्ट करबा पूर्वरु आ गुटे हमर जो सार्थक बैच स्टार्ट हेबा को अछि अक्टोबर 13 रु. तो जो माने भी ओडिशा हाई स्कूल टीचर पई प्रिपेयर करिया पे चाहूचो दे कैन एनरोल इन दिस बैच. सेमती विनायक नारे हमर OSSC CGL फाइनल तो ऑलरेडी सितंबर 1 टू स्टार्ट ही सारिची. So again जो मैंने enroll करिया पे चाहूँ they can enroll by using my code WAV532 so that you will get flat 17% off. Okay, now we'll move to the next questions. समस्त को सामने रहे छी. Next question. A cyclist travels a certain distance in 6 hours at a uniform speed. In return, he increases his speed by 2 km/h and covers the same distance in 5 hours. So what was his speed initially? वो आंसर को समझते. यस किछि टिके प्रॉब्लम होचे पिला माने आजिरो क्लास रे किछि प्रॉब्लम होचे. तो ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस फॉर टुडेस क्लास. आजिरो क्लास रटा मे बी इंटरनेट किछि इशू होचे, नेट टिके स्लो होचे आजि. तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस. आजिरो लास्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास को मु कंटिन्यू करबी आउ किछि क्वेश्चन सॉल्व करबी. सो फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. आज वर्षा बहुत जोर रे होची मे भी सिते पई इंटरनेट स्पीड होनी. ओके देखो तो ठीक अछि. A cyclist travels a certain distance in 6 hours at a uniform speed. Suppose that speed is s. Okay, suppose that speed is s1 जदि मु लिखुची. ओके तो स्पीड 1 s1. तो हमें जानी छु yes your speed is always equal to your distance by time. Okay, and distance equal to speed into time, and distance equal to speed into time. तो देखो एटी तो तुम्हारा distance change होनी है. cyclist travels certain distance in 6 hours at a uniform speed. In return he increases speed. तो first so this is distance जो cover कला तो s1 into 6. ओके तो s1 into 6 से डिस्टेंस कवर करिछि. तो तारो जदी 6 घंटा से कवर करछि तारो स्पीड जदी s1 अछि तो s1 into 6. इन रिटर्न ही इंक्रीजेस हिज स्पीड. तो इन रिटर्न ही इंक्रीजेस हिज स्पीड तो s1 plus 2 और से केते घंटा रे पहुंची गला 5 घंटा रे पहुंची गला. तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस तो चेंज होनी तो से सेम डिस्टेंस गला टाइम रे भी कवर करछि और फेरिला टाइम रे भी से सेम डिस्टेंस कवर करछि. तो s1 6 तो देखो या को जदी मु सॉल्व करबी s1 6 इक्वल टू s1 5 plus 10. ओके तो s1 6 minus s1 5 इक्वल टू s1 इक्वल टू 10. तो s1 जोटा होची सर 10 किलोमीटर पर आवर. तो 10 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर. सिंपल क्वेश्चंस. द करेक्ट आंसर वो 10 किलोमीटर पर आवर. ओके ओके आज लास्ट क्वेश्चंस आ मु क्वेश्चन देबी. एटा लास्ट क्वेश्चंस आजिरो ट्राई करो समस्ते.
when two dice are rolled together, what is the probability that the sum of the output is 8? Probability of questions exam re asibo nishchay. So all of you try to solve these questions. When two dice are rolled together, what is the probability that sum of the outputs is 8? So mane rakhita, probability of an event is always equal to your number of favorable outcome by total number of outcomes, and this ns is always equal to f to the power r. Your f equal to number of phases, and this r equal to your number of items used. Number of items used. Okay. Yes. So एटी देखो एटी फर्स्ट केस दीटा डाइस को रोल करा जाय छि तो तमरा डिनोमिनेटर रे केते रहइबो डिनोमिनेटर रहइबो 6 स्क्वायर सो दिस विल बी 36 एबे देखो तो जो तमरा एनएस रहइबो एमती रहइबो 1 1 1 2 like that 2 1 2 2 up to 6 6 so these are called your sample points sample space को आ जाय तो what is the probability that the sum of the output is 8 so sum of the output कोन कोन हे परिबो 2 6 हे परिबो again 6 2 भी हे परिबो सेमती 3 5 हे परिबो 5 3 हे परिबो आ गुटे आसी परिबो 4 तो टोटल कितना है लाटी 1 2 3 4 5 the answer will be 5 by 36 the correct answer will be your 5 by 36 clear okay तो आज टिके प्रॉब्लम होची पिला माने मे भी वर्षा होची बोली नेट टा टिके स्लो आछी ओके तो ठीक होची मु नेबे भी नेक्स्ट क्लास नेबी तो मैं माने टेलीग्राम